visible and am I audible properly? Maryam and Tariq? Yes, sir. So, first of all, the analysis, right? Which topics are important? यहाँ पे ये तो थोड़ा जो पब्लिशर है उनका एनालिसिस है regarding the important topics या फिर the topics from where most number of questions have been asked. Here we can see that. Here we can see that topic 3.3 has the most number of questions, which is temperature dependence of the rate of reaction. ठीक है, temperature dependence of the rate of reaction. And then 3.3, which is integrated rate equations. Integrated. Oh no, my bad. 3.4 है ये तो 3.3 ना. 3.3 is integrated rate equation, which is having the most number of questions and factors influencing rate of reaction. ठीक है. Factors influencing rate of reaction में आपके पास concentration terms and जो rate law expression है वो वाला है ना, that R is equal to K concentration of A to the power something. So ये है पूरा the rate factors influencing rate of reaction में main topic ये है. In integrated rate equation we have the zero order and the first order, जिसमें से I will say that first order is very important, जिससे हर साल कोई ना कोई सवाल जरूर आया है. ठीक है, तो if you are studying chemical kinetics chapter, then you cannot ignore the first order questions, है ना, questions that is related to first order reactions. अगर आपने उसको इग्नोर किया यानी कि आपके मार्क्स गए, मतलब पक्का गए. ठीक है. So if you are preparing for chemical kinetics, then you have to keep in mind that first order miss ना हो, चाहे उसमें जितने भी टफ सवाल आ जाए उससे मिस नहीं होनी चाहिए. ठीक है, so these are the important topics and चलिए towards the questions now. First of all, we'll start with MCQs. Now this question थोड़ा जल्दी आंसर करने की कोशिश कीजिएगा. ठीक है, इवन दो द क्वेश्चन इज क्वाइट बिग बट इट इज एमसीक्यू, तो 1 मार्क्स का ही सवाल है. Send your answers on my Zoom chat. Hmm. मरियम तो चलिए ठीक है. Let's see. In the following the following experimental rate data, experimental rate following experimental, अच्छा, the following experimental rate data were obtained for a reaction carried out at 25 degrees Celsius. Initial A and B and it is the initial rate. अब यहाँ पे आपको ऑर्डर पूछा हुआ उन लोगों ने. ऑर्डर के लिए क्या करते हैं? सी फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड वी आर डबलिंग द अमाउंट ऑफ बी. We are doubling the amount of B, but there is no change in the rate of reaction. That means B to the power 0 है. Now,
Either it is the B option or the C option because यहीं पे zero है. So yeah, maybe this is correct or this is correct. Let us look at the next case. We have kept the concentration of B same and we have doubled A. And when we are doubling the A, what is happening to the rate of reaction? The rate of reaction is going how many times? Approximately 4 times. अगर ये 2 होता तो फिर ये 8 भी हो जाता, right? So if you are doubling it, the rate of reaction is going 4 times. That means the order of A, it is 2. So second order. So C is the correct option. Yeah, Tarif and Mariam, correct. Very nice. So next we have some assertion reason questions. Yeah, try this. Use the true false method to get the answer. Waiting for Tarif's answer. See here. The first statement is true, right? The molecularity of the reaction H2 plus Br2 gives 2 HBr gives 2. ये 1 और ये 1 तो सही है. This is true. Two molecules of reactant are involved in the given elementary reaction. That is also true. Now we have to make assertion because reason and see whether it is false. The molecularity of this reaction appears to be 2 because two molecules of the reactants are involved in the given elementary reaction. So assertion because reason, this is also true. So the option A is correct. ठीक है? चलिए. See the seventh one. Okay. Just waiting for you guys, Mariam and Tarif. See, order of reaction is applicable to elementary as well as complex reaction. Tell me guys, true or false? देखिए, order of reaction सबके लिए applicable है, ठीक है? This is true. For complex reaction, molecularity has no meaning. This is also true.
कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्युलरिटी का मतलब नहीं, एलिमेंट्री में ही सिर्फ मतलब है ना। फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देखिए, आई थिंक ये सेम स्टेटमेंट विल बी देयर इन योर नोट्स, सेम स्टेटमेंट। ठीक है, molecularity of a reaction is only applicable for elementary reaction, it has no significance for complex reaction, ठीक है, it has no significance। देखिए, how order and molecularity are different for complex reaction, it is determined by RDS, and it molecularity has no meaning for complex reaction, ठीक है। So molecularity, it has no meaning for what, for the complex reaction, for complex reaction molecularity has no meaning, this is also true। बट यहाँ पे बात हो रही है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, यहाँ पे बात हो रही है मॉलिक्युलरिटी के बारे में। सो ऑब्वियसली assertion because reason अगर आप करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, बिकॉज फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी हैज नो मीनिंग, इट डज नॉट मेक सेंस, है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी का कोई लेना देना नहीं, दैट इज वाई बी ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट। Just give me a second, guys। Yes। Yes, very important, what happened, just Safia is also here। सफिया, थोड़ा टाइमिंग का ख्याल रखें, ना क्वाइट लेट। तारीफ आप आंसर नहीं कर रहे हैं, यस तारीफ, व्हाट हैपेंड। My Wi-Fi is a bit weak now. That's why. हाँ तो बट आप जूम में तो आंसर कर सकते हैं ना, Yes, sir. One एबीसी। second. जी। तो सफिया, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? यस सफिया।
Sophia is not here. See, देखिए 25th नंबर जो है ना, H2 plus Cl2 gives H nu plus gives and 2HCl. This is a photolytic decomposition reaction. It depends solely upon the amount of light you are giving. अगर आप लाइट नहीं देंगे तो रिएक्शन होगा ही नहीं, ठीक है. सो हियर इट इज डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ लाइट. इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन H2, neither it is dependent on Cl2. So the correct option is C, that is zero order reaction. This is an example of zero order reaction. अगर द हाफ लाइफ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इट इज इक्वल टू, अब ये दिस इज डायरेक्ट फॉर्मूला जो कि आपको याद रखना चाहिए. द आंसर इज डी, आर नॉट बाई 2K. So let us do some numericals now. ग्राफ के सवाल नहीं दिख रहे, ग्राफ के भी सवाल होने चाहिए थे. We'll try this. Try the 17th one. What happened, guys? First, ये तो काफी आसान है. How is the rate of reaction affected if the concentration of B is doubled? नहीं, दे आर आस्किंग कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा. दे नॉट. चलिए ठीक है, तारीफ ने थोड़ी कोशिश की है बट सी,
अगर आप लोग पढ़ के नहीं आ रहे ना तो फिर दिक्कत की बात है ना। ऐसे तो बड़ा मुश्किल होगा। थोड़ा सा आप लोग पढ़ के आया करें प्लीज। सफिया इज हियर बट सफिया इज शी इज नॉट रिप्लाइंग एनीथिंग। नहीं है। आर इज इक्वल टू, जो आर टू होगा आपका, दैट विल बी इक्वल टू चेंज, और पावर में होगा वॉट एवर दी ऑर्डर इज आर वन। ठीक है। अब चेंज क्या हो रहा है, बी, बी को क्या कर रहे हैं हम, डबल कर रहे हैं। ठीक है। ऑर्डर क्या है बी का, टू है, आर वन। दिस इज इक्वल टू फोर टाइम्स ऑफ आर वन। तो जो आर टू होगा, इट विल बी फोर टाइम्स ऑफ आर वन। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्लास में। व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर इफ ए इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सिस। अगर एक्सिस में कोई चीज होती है, देन we don't consider it in the rate law expression. That is why the rate law will be equal to k into the concentration of b to the power 2, and the order will be what, order is equal to 2. Moving on. I'm expecting you guys to do these questions, okay? So we try this. Guys, send the answers once you're done. Oh, guys, this is quite easy, यार। इतना ज़्यादा तो टफ है नहीं। A reaction is second order with respect to its reactant. That means we have R that is equal to K, the concentration of A squared, 14 times। नहीं। अच्छा तारीफ, यार आप सही आंसर नहीं कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है ना। यस तारीफ, द फर्स्ट आंसर इस तरह से आंसर। हाँ वैसे कीजिए। How will it reaction rate be affected if the concentration of reactant is doubled? Same चीज तो करना है आपको। R2 is equal to whatever change is happening to its order
इंटू R1। क्या चेंज हो रहा है आपका? ए है ना, एक ही रिएक्टेंट है, इट इज गेटिंग डबल्ड। डबल का मतलब 2 to the power 2 टाइम्स R1, दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स R1। दैट्स इट, आपको इतना ही लिखना है बस, और कुछ नहीं लिखना है। सेकेंड है, व्हेन इट इज रिड्यूस टू हाफ, R2 is equal to change to the power order into R1. This will be equal to 1 by 2 square R1. That is R1 by 4. It will become 1/4। ये आसान सवालों में आप लोग इतना टाइम लगाएंगे, कैसे चलेगा? मैं सवाल देखिए। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जल्दी आना चाहिए आंसर। आपको पता नहीं किस चीज का इंतजार करते रहते हैं। सफिया, आपका एक भी आंसर नहीं आ रहा है। आई होप आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है आपने। अगर क्लासेस ओवर हो चुके हैं, सिलेबस ओवर हो चुका है, तो रिवाइज कीजिए आप बैठ के, है ना। दिस इज द डेटा एंड दीज आर द क्वेश्चंस। Try this also. This is pretty much easy, not very tough. Send the answer for the first one once you have got the first answer.
We have got some answers. Acha, fine. Let's see. So what are we doing here? We are doubling the concentration of X and the rate is also getting doubled. यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है. That means same power है ना? So for order of A और order of X it is equal to 1. ठीक है? अच्छा जब okay 2 2 1 1 0 2. Okay. If I look at 3 and 1, so when I go from 3 to 1, we are not changing the amount of x, but we are doubling the amount of y into 2. But if I see the change, there is no change. This is 1 itself. ठीक है? So obviously 2 to the power 0 होगा तभी 1 होगा. So order with respect to y will be equal to 0. Rate law expression will be written as R is equal to K into the concentration of x to the power 1 and y to the power 0. Then you need to find the rate constant. Rate constant आपको निकल जाएगा इस तरह से. You can see that R is directly is equal to K into the X. तो आप ये पहला वाला ले लीजिए है ना. So rate it is equal to rate क्या है आपके पास 0.05 is equal to K into concentration of X is 0.1. So K will be equal to 0.05 divided by 1, sorry, divided by 0.1, which will be equal to 0.05 divided by 1 by 10. This will be equal to 0.05 into 10, which will be equal to 0.5. This will be unit. Unit will be what? First order reaction है तो इसका unit क्या होगा? Minute inverse, minute inverse. है ना? It is in minutes, it will be minute inverse. This is the rate constant. चलिए इसको print कीजिए.
Tarif has got some answers. Chaliye, let us see. They are saying for reaction to N2O5 gives 4 NO2 and O2 the rate of reaction. Calculate the rate of reaction if the rate of disappearance of N2O5 is 1.4 into 10 to the power minus 3. Okay. So in terms of N2O5, we will write that R, or rate, is equal to 1 by 2 into minus dN2O5 divided by dt. Now this whole thing is what? This can be referred as rate of disappearance of N2O5. And we have been given rate of disappearance of N2O5 as what? 1.4 into 10 to the power minus 3. Which will be equal to 0.7 into 10 to the power minus 3, which will be equal to 7 into 10 to the power minus 4 molar per second. और कुछ और आंसर आ रहा है? यस, तारीफ कहाँ गलती कर दिया आपने? कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना ना, देखिए जरा तारीफ।